Character list in Oedipus Rex by Sophocles. First character is Oedipus. Long before the play begins, Oedipus became king of Thebes by solving the riddle of the Sphinx. जो स्फिंक्स थी उसकी रिडल को सॉल्व करने के बाद जो एडिपस है वो थीब्स का किंग बन गया. His sharp mind and quickness to action have made him an admired and successful leader. और throughout the play he makes decisions boldly and quickly, if not always wisely. अब यहाँ से नीचे से मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ. Oedipus to be the murderer and husband of his own mother, the same leadership skill that have brought him fame and success, deceives action, a desire to solve miseries using his intellect, drive him to his own destruction. इसके बाद इसका करैक्टर है करियोन. ये जो कैस्टा का भाई है और करियोन ही है जो प्ले जब स्टार्ट होता है तो उसके शुरू के अंदर लोगों से गुफ्तगू करता है. करियोन इज मोर पॉलिटिकल एंड परहैप्स मोर स्कीमिंग. और उसके बाद है ट्रिसियास. ट्रिसियास इज द ब्लाइंड प्रॉफिट आर सीयर. ये वही है जिसने पहले पेशगोई की थी एडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा. फिर बाद में जब एडिपस इसको रिडल जो प्लेग है उसके सिलसिला के अंदर बुलाता है तो फिर ट्रिसियास कहता है कि वो तुम ही हो. That Oedipus has killed his father and married his mother. उसके बाद जो कैस्टा है वाइफ ऑफ एडिपस, also mother of Oedipus. When the play begins, she no longer believe in the prophecies of seers. फिर जो कैस्टा का ये करैक्टर है ये इसको आपने देख लेना है. द चोरस. In this play, the chorus represent the elder citizen of Thebes reacting to the events of the play. The chorus speaks as one voice, or sometimes through the voice of its leader. A priest. He comes to the royal house to tell Oedipus of the city's suffering and to ask Oedipus to save Thebes once more. A messenger. The messenger from Corinth informed Oedipus that King Polybus and Queen Merope of Corinth were not his actual parents. The messenger himself gave Oedipus as a baby to the Corinth king and queen. He got the baby from a Theban shepherd whom he met in the woods. Oedipus' ankles were pinned together at the time. In Greek, the name Oedipus means swollen ankles. A shepherd. ये shepherd चरवाहा वही है जो किंग लोइस का चरवाहा था जिसको एडिपस के ऊपर रहम आ जाता है और उसको मारता नहीं है. और वो shepherd that tell him that he knows about Oedipus' origin. The shepherd refuses and only relents under punishment of death. Antigone, daughter of Oedipus and half sister of Oedipus, still a small child in Oedipus Rex. ये एडिपस की बच्ची है, लड़की है, उसका नाम है Ismene, daughter of Oedipus and half sister of Oedipus. लाई एंटीगोन. ये इसके करैक्टर्स हैं एडिपस रेक्स के.